या हेलो एवरीवन। सो आज हम इस सेशन में हम बनाएंगे एक लेन डिटेक्शन एडीएस सिस्टम, जिसमें कि हम एक लेन डिटेक्शन सिस्टम और एंटी कोलिजन सिस्टम लेडार के थ्रू ऐड करेंगे. So in today's session we will try to make a lane detection system using the OpenCV and image processing for a ADAS system, where we add a lane detection system and anti-collision system using the LiDAR and the camera. आप सभी लोग ऑटोनोमस व्हीकल देखा होगा या अपने कार्स में और न्यू जो हमारे मॉडर्न बाइक्स और ईवीज आ रहे हैं उसके अंदर आपने एडीएस सिस्टम देखा होगा, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम देखा होगा. उसमें क्या होता है, ये हमारा एक सिस्टम होता है जो कि आपका उसके अंदर लाइडार्स और भी बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरा लगे होते हैं, जो जो आपको आपके ड्राइविंग में हेल्प करता है. ऑटोमेटिक वो लेन के अंदर रखता है गाड़ी को, अपने आप को वो आपके ऑटोमोबाइल को, बाइक, कार को ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी कभी कर देता है या फिर अलर्ट कर देता है कि आपका बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हो, आप एक्सीडेंट होने वाला हो सकता है, या फिर आपके स्पीड को ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट कर देता है जब ऐसा हो, या फिर आपके कार के स्टीयरिंग को अपने आप लेन के अंदर कैलिब्रेट करके लेन के अंदर रखता है. तो एडीएस सिस्टम आज करंट सिचुएशन में बहुत ही नेसेसरी है. ऑटोनोमस व्हीकल में भी ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है कि हम लेन डिटेक्शन करें और ऑटोमेटिक वो कार को ड्राइव कर सके, वो लेन के अंदर रख सके और चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सके और किसी भी कोलिजन को से बचा सके. तो इन सबको बनाने इस पूरे सिस्टम को हम एडीएस सिस्टम बोलते हैं या ऑटोनोमस व्हीकल सिस्टम बोलते हैं, यदि वो ऑटोनोमस व्हीकल को चलाने के लिए है. तो आज हम एक ऐसा ही सिस्टम बनाएंगे. टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ सेम सिस्टम फॉर द ऑटोनोमस व्हीकल, वेयर we will make a we will use the lidars and the camera to detect the lanes and the vehicles and help the vehicle to keep in the lane and avoid collision. And this is the second part of the session. This session is going to be the second part of the session. If you haven't seen the previous session of this ADS system, then you can check it later after this session. ये जो सेशन है हमारा पुराने सेशन एंटी कोलिजन सिस्टम का सेकेंड वर्जन है, सेकेंड सेशन है, जिसमें कि हम उसको और मॉडिफाई करके इस सिस्टम को हम बनाएंगे, जिसमें कि लेन डिटेक्शन सिस्टम को भी ऐड करेंगे. तो यदि आपने पुराना हमारा लाइव सेशन नहीं देखा है तो आप इसके बाद इस सेशन के बाद आप उसे चेक कर सकते हैं. तो एक बार बता देते हैं हमने पिछले सेशन में हमने क्या किया था और उसके बाद इस बार हम क्या नया करने वाले हैं, उसका एक आपको डेमो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसे कैसे बनाते हैं. फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव डन in previous session, and then we will go forward with the what we are going to add in this session. So as you can see in my screen, this is my screen. Yeah, this is my screen. So as you can see here, we have made this anti-collision system where we use the LiDAR. Here is the LiDAR that I am showing you. Yeah, we have made the anti-collision system with a LiDAR mounted on the automobile like this, and this LiDAR map the surrounding data, and it will analyze whatever the vehicle coming front of our car, and whatever the vehicle coming behind our car, and if that vehicle get so close and it is about to collide, it is about to accident, then it will automatically either alert the driver or it will automatically make the auto braking system. तो जैसा कि हम अब पिछले सेशन में मैंने बताया था कि हमने इस प्रकार के एक लैडर को यूज किया था, इस प्रकार के हमने एक लैडर को यूज किया था जो कि अपने सिस्टम से कनेक्ट किया था और इसको प्रोग्राम किया था कि हमारे चारों तरफ कार को स्कैन कर सके, उसका इस प्रकार का एक प्लॉटिंग कर सके, और साथ में हमें ये भी बताया कि हमारा कार के आगे कोई भी एक्सीडेंट होने वाला है, हमारा कार का आगे कोई बहुत ही स्पीड से आ रहा है और एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसको हमें पहले अलर्ट कर सके या फिर ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम को यूज करके ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा सके. तो इस प्रकार का हमने एडीएस सिस्टम के लिए ऑटो कोलिजन सिस्टम बनाया था. अब इसी को हम आगे बढ़ा के एक लेन डिटेक्शन सिस्टम बनाएंगे, जिसमें कि हमारा कैमरा कार के आगे लैडर के साथ एक कैमरा भी लगेगा और ये लेन को डिटेक्ट करेगा और हमारे कार को उस लेन के अंदर रखने की कोशिश करेगा. तो हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे. तो इसमें हम इमेज प्रोसेसिंग का यूज करेंगे. तो इस जैसे कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि हमने इसमें लैडर यूज किया था, इस प्रकार का एक लैडर को यूज किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो इस सेशन में हम इस प्रकार का एक लैडर के साथ हम एक कैमरा को भी यूज करेंगे, जो कि कार के अंदर कोई भी आप ऑटोमेटिक ब्रेक का कैमरा ले सकते हैं. यहाँ पे मैं टेस्टिंग के लिए यूएसबी कैम ले रहा हूँ, तो आप कोई भी कैमरा ले सकते हो.
तो इसमें हमें एक जरूरत पड़ेगा एक एसबीसी का, जो कि कंप्यूटर का, जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जैसा कि पिछले सिस्टम में मैंने रास्पबेरी पाई यूज किया था, पर इस पर हम कुछ इमेज प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं और लैडर का स्कैनिंग भी कर रहे हैं, उसका प्लॉटिंग भी कर रहे हैं और इमेज प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। तो यदि मैं रास्पबेरी पाई को यूज करता हूं तो थोड़ा ये स्लो हो जाएगा। आप रास्पबेरी का पाई को भी टेस्टिंग के लिए या कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ही सस्ते में बना दोगे। इट इज वेरी चीप इफ यू यूज द रास्पबेरी पाई, बट द प्रोसेसिंग गेट वेरी स्लो. For the better processing and for the automatic grade, for the actual deployment on the automobile or EV or the car, we need a better board other than this Raspberry Pi. So you can use the NVIDIA Jetson board, this NVIDIA Jetson board like this one, or any other better version of Raspberry Pi, which gives you the same processing around the NVIDIA Jetson. So you can use any other SBC that support the Python and have the USB and have better processing than or processing power around the NVIDIA Jetson. So here I am using this NVIDIA Jetson 4 Nano and in place of the Raspberry Pi, but you can make this project on Raspberry Pi as well. You need to connect this. So these are the things we need. One is the SBC board, either Raspberry Pi, or you can, for the actual deployment on the automobile, you need NVIDIA Jetson. And then our USB webcam for a better, the better the USB webcam we will buy for the actual deployment automotive grade, then it will be better. But here we are going just for test, so we are using the USB webcam. यहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे USB webcam ही यूज करेंगे और एक ladder यूज कर रहे हैं. You can use any RPi ladder and Velodyne ladder, like I have already told earlier in the previous session. You can check the previous session how to connect the ladder and how to get the data. You can check the previous session. This is the second session of the previous session, so I'm not going to tell you that detail. So ladder actually, our ladder actually, most of the ladder and our ladder is also connect the USB, and it gives the data transfer using the baud rate serial communication using the baud rate of 15200. So every ladder, most of the ladder use the Bluetooth or sorry, not Bluetooth, using the serial communication either by USB or any FTDI cable. So most of the ladder use these things. But there are some ladder we might use the other peripheral as well. But here most of the ladder use the serial peripheral. So I have connected this ladder using the USB to the NVIDIA Jetson board, and this ladder is moving as you can see. जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत सारे लैडार जो है, मोस्ट ऑफ द लैडार जो मार्केट में मिलते हैं, वो ज्यादातर आपका सीरियल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं और यूएसबी से कनेक्ट होते हैं. तो आप कोई भी लैडार यूज कर सकते हो, आरपाई लैडार और वेलोडाइन लैडार और रियल सेंस का लैडार और बहुत सारे ऑटोमेटिक ग्रेड का लैडार. मैं यहाँ पे सस्ते वाला यूज कर रहा हूँ. इस लैडार का वर्जन नेम है वाईडी लैडार X2. या फिर आप आरपाई लैडार भी यूज कर सकते हो, रास्पबेरी पाई का जो लैडार आता है, या फिर आपको वेलोडाइन और ऑटोमेटिक ग्रेड का अलग लैडार भी यूज कर सकते हो यदि आप ऑटोमेटिक और ईवी पे आप इसको डिप्लॉय करने वाले हो या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो तब. और एक कैमरा यूज कर सकते हो और एक एनवीडिया जेटसन यूज कर सकते हो. तो ये हमारा यूएसबी से कनेक्टेड है और हमारा कैमरा भी यूएसबी से कनेक्टेड. तो पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ये क्या होगा. उसके बाद हम इसे बताएंगे कि कैसे चलता है. let me first show you the demo, how it's work and how it's look, and then I will show you how we are going to make it. So here I am going to open the terminal, and as you can see here, all the components are connected using the USB. And now I'm going to run this run the code and show you how it is going to work. So let me show you this is our setup. So we are not on road. So here what I have done is that I am playing the video of road, so that it can detect the lane using on this road, and then I will use this LIDAR, so it can detect the surrounding and scan it and tell us. So I am going to run this code, and it will start working. Our ADS system will start working. So I am going to run the code. Now I'm going to play this video. So as you can see, LIDAR is scanning, and it is showing the speed of the thing. And now let me show you. And here it is plotting the surrounding. Here the LIDAR is plotting the surrounding, and here we have the. So here is the LIDAR is scanning and plotting the surrounding. Here it is giving the speed, and when someone close,
near to the LiDAR, it will show the speed, speed, slow the speed, and that message. And here is the lane detection system, how it is working. I am going to show you. Yeah. See, it is detecting the lane and try to keep the vehicle in lane. So this is how the system works. If I change the lane, then it will detect the other lane. See. So this is how our system work. I am showing you a good video of that, actual video of that, how this is going to work. So so this is how our system work. It will show you the scan data, and this is the lane and the road. So it will detect the lane and try to keep the vehicle in the same lane that you are driving at, and it will, whenever you change the lane, it will detect the other lane, and it will automatically shift out the lane of the vehicle, and it will try to keep the vehicle in the same lane. And it will also scan the surrounding, and when any obstacle will become, then it will it will alert you, and it will give you the live mapping. But here I have not fixed it on the actual vehicle, so it is showing the this scan data, because this is my room, and I'm moving this ladder like that, so it is giving any random thing like that. And so it is detecting a lane like this, you can see. So and this is the setup, these are the things that we need. See, it is detecting the lane. So this is the thing, this is the ADS system that we are going to make, and these are the components that we are using here. I am using the 1 minute, I'm taking out the video. So I am using the USB camera. I have already told you, you can use any good quality USB camera, or if you're actually deploying on the automotive vehicle, then you can use a better quality USB camera for automotive grade, and you can use any LiDAR, and then this NVIDIA Jetson board. Or if you are using as a making it for college project, you can use the R5 board as well. But for the better performance and actual requirement, you use the NVIDIA Jetson board. So now let's see how we can make. So like last time, for taking the LiDAR data and implementing the anti-collision system, implementing the anti-collision system. 1 minute. Let me close this. Implementing the anti-collision system, we have already discussed in the last time. So for that, we need whatever the LiDAR, whatever the company of the LiDAR you are using, you need to install the library of that LiDAR. Like if I am using the YD LiDAR X2, then I need to install the Python library of YD LiDAR X2. Here you need to go to the PyPy and search the library and drivers of the respective LiDAR. If you are using the any RPi LiDAR, then you can search the RPi LiDAR Python library and a driver. And whatever the company you are buying, they will give you the the driver and the library with that to use that LiDAR with the board. So here I am using YD LiDAR. So I will search it and install the YD LiDAR library. Yeah, here is the YD LiDAR, and it will also support the Pi LiDAR as well. So you can install this library for the YD LiDAR. If you are using some other LiDAR like Velodyne or something, then you can install the Python library. So for installing the Python library, you need to go here and install the Python library. NVIDIA Jetson. Pi LiDAR, and it will install the library. But I have already installed this, so I'm not installing it.
So after this, this library, any of like our ladder or any other ladder, most of the ladder I've already told you that they work on the serial port. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे ladder serial port पे काम करते हैं। तो आपको सीरियल पोर्ट को यूज करने के लिए आपको एनवीडिया जेटसन में आपको या फिर रास्पबेरी पाई में आपका एक लाइब्रेरी है जिसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका नाम है सिस्टम में आपको अपने लैडर से कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट के ऊपर, यदि आपका लैडर सीरियल पोर्ट पे काम कर रहा है, यूएसबी सीरियल पोर्ट पे काम कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द लैडर जो है वो इसी पोर्ट पे काम करता है। लेकिन यदि कोई लैडर किसी और कम्युनिकेशन पेरिफेरल को यूज कर रहा है, देन आपको उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो इसने बता दिया कि हम योर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। फिर आपको जो प्लॉटिंग जो मैंने दिखाया, जो हमारा जो लैडर जो प्लॉटिंग कर रहा था इस प्रकार का, जो हमारा सराउंडिंग को प्लॉट करके जो बता रहा था इस प्रकार का, एक मिनट, the ladder, for the plotting of the ladder, for getting the plot data like this, the surrounding plot map like this. So for that we use the matplot and numpy. Numpy is for the processing and matplot is for the plotting. So we need to install the matplot library. So you can search this library to find how to install the library, the command to find how to install matplot. So you need to install this library. You need to just sudo pip install matplot. So I will install. I've already installed that library, so I'm not installing it. When you hit enter, it will install the library. So for any library that you want to install, you can use this thing, same thing, sudo pip3 and followed with the library name. Here we are using the matplot, then I will install the matplot library. Now, if you want install the numpy library for the numerical processing, NumPy. And I have already installed it, so I'm just skipping this. So after installing this library, you are all set to get the LIDAR data, and after that you need to clone the respective library of the LIDAR. Like for the YDX2 LIDAR, I have cloned this thing, and then you can set. You can prepare the code and modify the code of this library to get the data of the LIDAR and oh no, sorry. Get the data of the LIDAR and use the matplot library, import the matplot library for plotting surrounding and getting the data of the LIDAR, and then you can use the if conditions if you want it, the alert when your vehicle is going to collide. यदि आपको कोई आपका व्हीकल को जब किसी से टकराने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, आपको किसी सेफ डिस्टेंस पे अपने व्हीकल को अलर्ट सिस्टम चाहिए या ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, तो आप इस प्रकार का इफ कंडीशन यूज करके उस एंगल के बीच में उसके डिस्टेंस को चेक कर सकते हो। सपोर्टेड मुझे 400 मीटर ये 400 सेंटीमीटर या फिर 400 मीटर या 100 मीटर, वाट एवर द डिस्टेंस यू वांट टू एज ए सेफ डिस्टेंस to make your vehicle stop before it is going to actually collide with that before it's going to actually accident, then you can use that distance here and make a and then you can either alert the cell, or you can also give the alert using the any kind of sound or any kind of GPIO output. Or if you have auto braking system using the actuator, then you can simply add the you can simply give the digital output as a high to the to move the actuator for the auto braking system. So these are the things you can set in the code. I have already told this thing everything in detail in the previous session, so you can check the previous session if you didn't watch it, and if you have already watched the previous session, then you can proceed with the next one. So this is how the anti-collision system you can set up with the LIDAR, and after that you need to mount the LIDAR on the car like this, on the car like this, on the car like this, on the car like this. So I've already told you in the previous session regarding that. So now let's move the further. So now today what we are going to add in the previous ADAS system is the lane detection system. So our main motto for the today is the lane detection system. For the lane detection system, we are going to use OpenCV library to detect the lane. This is the okay.
So for that, I will I need to install the OpenCV library. So I have already told you that you can install the OpenCV library either by, or you can use the another command here. You can search the OpenCV library, how to install that. OpenCV library, this yeah, you can install the OpenCV library using this command sudo pip3 OpenCV. If you get error with this command, then you can use this one. If you are using the Python 3, then you can use sudo pip3. If you are using Python only, then you can use pip only. So I am using Python 3, so sudo pip3. Sorry, sudo pip3 install OpenCV Python. And after that it will install the OpenCV. But I've already installed it, so I'm stopping this because it will get the version conflicts. It will reinstall that again, and I will get the version error. So I'm skipping it. So for the image processing, you need the OpenCV Python. So after that, we need to create the lane detection code. So here is our lane detection code that I have created. Let me show you. Yeah, here. So here is a lane detection code. So first, what we need to do is import the OpenCV libraries for the image processing, and then we will use a NumPy for the numerical calculation uh, in that frames what is captured by the OpenCV library, and then process that. For the processing that we will use a NumPy as well for the numerical calculation. After that, we need to capture the the video from the webcam. So you can use this command will help you to capture the video frames from the camera using the OpenCV. Thing can be changed with USB port or if you are using. I am using the default camera, the USB camera. Here, if I keep this thing as a video capture 0, then it will capture the video using the default camera. What is the set? But you might need to use USB one thing like that according to the USB port or according to the camera setting. So this thing varies with the camera. So you need to check that thing. Here I am using. Here if I keep it 0, then it will work for me and it will be able to capture the video. Then after that, after capturing this after getting defining this capturing device, we will create a loop using the while true, and then we will capture the frame by frame from the camera and resize that frame into certain, so that we will able to do the processing easily. Because if you keep the frame size like 1080p into 720p large frame size, so it become larger frame size will be more load on the NVIDIA Jetson to process that image, and it will take more times and might be face lags if you use the high resolution. So we will resize the frame into the smaller frame, so that we will it will take the small frame, and it will able to easily process that thing. Then we will convert that image into the grayscale. Then we will add a certain layers, and we will process the image. We add all the image processing code, so that it will able to detect the yellow line and white line on the lane. So this part of the code is for detecting the yellow line and white line on the lane. So we will add as we will convert into the
the BGR format, and then with the gray format, and we will detect the upper white line, yellow line on the lane. And after that, all those processing on the lane, it will these are lane line. You need this code, this kind of code, this piece of code for the this piece of code for after detecting the lane. Suppose that it have detect the lane, so how it will show you that it have detecting the lane in the real time. So this piece of code will add the hog lines, those yellow line, those red lines like this, that it is detecting this lane and it is following this lane like that. These lines, see these lines after detecting the lane. That's This is the road, so that vehicle will keep itself around around this lane, in that particular lane. So after that, after processing all these processes, these are all the image processing code in the of OpenCV, where you first you need to convert the frame, resize the frame, and then you convert into the grayscale, and then you will detect the yellow line and white line using this piece of code, and then you will after detecting the lanes and lane, white line, yellow line, you will add the hog line and the edges what you have detected using the red line on that. And this is thing you can change the line thickness, so that how much thick the line it will show when it detected the lane, the hog line. And after that, it will show you the frame. This thing is for showing the image frame in the real time. If you want to add something more, like adding the object detection or person detection, you can add those things, those machine learning, those AI things as well in the same code. But we will do that later in the next session. So you can add that. And after that, our code is ready, and then you will run the code. And I will publish this code on electronics for you in next, already published this code, and the whole project on electronics for you. You can check it. I have described all the working pieces of the code. And if you have any kind of doubt, you can always ask me. So after this we have created the code of the lane detection system. So after creating the code, when you run this code, it will start detecting the lane. It will start detecting the lane like this I am showing you. ये आपका लेन को डिटेक्ट करने लगेगा इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ. 1 minute. इस प्रकार से आपका ये लेन को डिटेक्ट करने लगेगा. 1 minute. It will start detecting the lane, whatever the lane you are in. See, it is detecting those lines. So this is for the lane detection thing. Our lane is detecting, but here the thing is that our lane detection code is separate, and this is the LIDAR plotting thing. ADS thing is it's separate. So how you 1 minute. This is our lane detection code. 1 minute, it is opening. Yeah, so this is our lane detection code, and this is our LIDAR code. So both code are different, and both are the separate code. So how this whole system work work as a combined system? How those
two different system, two different Python code work as a combined code and give us a whole ADS system and whole ADS feature. So these code are different. These code are different. This code is different, and and another code is different. Yeah, these two are the different codes. The lane detection code are the different, and the LIDAR code are different. So how do we combine those so that we can work as a combine? So you can't run the both programs separately at the same time here. So for this we use the sub processing. So in sub processing, what the Raspberry Pi will do, it will start the both of these script at the same time, and work and gives us the feature of the whole combined ADS system, like lane detection and collision alert and mapping using the LiDAR. So for that we have created another code, a Python code that is for the sub processing, that is the ADS in the same folder where you keep the both of the code, जहाँ पे आप दोनों कोड रख रहे हो, लेन डिटेक्शन और लाइडार से स्कैनिंग और एंटी कोलिजन वाले कोड, उसी जगह पे आपको एक और कोड बनाना है। 1 मिनट। उसी जगह पे आपको एक और पाइथन कोड बनाना है। आपको एक और पाइथन कोड बनाना है जो दोनों कोड को कंबाइंड वे में रन करे और हमें एक टोटल एडीएस सिस्टम, एक एडीएस एक्सपीरियंस दे सके, जिसमें कि वो लाइडार से स्कैनिंग भी हो रहा है, स्कैन डाटा को भी दिखा रहा है रियल टाइम में, कैमरा से कैप्चरिंग भी हो रहा है, सामने के आपके कार के फ्रंट का वीडियो और लेन को डिटेक्ट भी कर रहा है, कार को उस लेन में रखने की कोशिश भी कर रहा है, और साथ में वो लाइडार से कोई स्कैन डेटा जो आ रहा है उसमें यदि कोई व्हीकल बहुत ही नज़दीक आपके आ रहा है और आपके व्हीकल से टकराने वाला है या एक्सीडेंट होने वाला है तो अलर्ट भी कर रहा है, और उसमें ऑटो ब्रेक लगाने का सिस्टम भी है। तो वो सारे चीज़ को एक कंबाइंड वे में कैसे वो रन होगा, जबकि सारे कोड अलग अलग है। लाइडार का प्लॉटिंग कोड अलग है, आपका लाइडार का एंटी कोलिजन का कोड अलग है, लेन का कोड अलग है। तो इसके लिए हम एक और पाइथन कोड बनाएंगे जिसमें कि एक सब प्रोसेस कोड बनाएंगे जिसमें कि वो सारे कोड को एक साथ रन कर सके और सारे डेटा को एक साथ कंबाइंड वे में दिखा सके और वर्क करा सके। तो इसमें हम ये बहुत ही सिंपल सा इसके लिए प्रोसेस है, और ये प्रोसेस 2 लाइन में हो जाएगा। पहला प्रोसेस, पहला लाइन है कि आपको इसके लिए एक सब प्रोसेस मॉड्यूल को, पाइथन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो सारे कोड जिसको कि आपको रन कराने हैं एक साथ एक कंबाइंड वे में, उसके लिए आपको सब प्रोसेस डॉट रन में आपको जो भी पाइथन वर्जन आप यूज कर रहे हो, यदि आप पाइथन 2 यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ पाइथन रखोगे, नहीं तो आप जो भी पाइथन वर्जन आप यूज कर रहे हो उस पाइथन वर्जन में उस सारे कोड को एक एक करके आप रन कर दोगे। उस कोड को आप सारे कोड को एक ही साथ आप रन कर दोगे। इसके बाद आपको इसको एडीएस सिस्टम को ऐसे करके आपको सेव कर लेना है। उसके बाद एडीएस सिस्टम को आपको ऐसे ये कर लेना है, सेव कर लेना है। फिर आपको आप इस कोड को रन करोगे तो जितने भी हमारा जो सेपरेट कोड है लेन डिटेक्शन सिस्टम का और बाकी आपका प्लॉटिंग का, लाइडार का, प्लॉटिंग का, एंटी कोलिजन का, सारे कोड एक साथ रन करेंगे और एक एंटी कोलिजन आपको एक पूरा एडीएस सिस्टम की तरह वो एक साथ कंबाइन वे में रन करेंगे। फिर आपको उस कोड को जहाँ पे रखे हो उसको टर्मिनल में खोल लेना है। When you open the terminal and when you run that code, it will give you the whole data. When I run that code, it will start giving us the data. As you can see, there are lots of windows open. As you can see, it is LiDAR. It is giving the LiDAR data, scan data, and when I move close to that, LiDAR here. When I give close to that LiDAR here, and it will give us the alert that someone is close and you need to drive the vehicle slowly. Here in this. Yeah, see, please drive slow, and when I remove that it will stop that. And this is the LiDAR scanning data. This is my room, it is scanning and showing here, and this is the lane detection system. So when I put the camera with the road video,
it will detect the lane. So I am going to put the lane detection. So I am going to play the video so that it can start detecting the lane. So it will start detecting the lane. See. So this will work as a whole code. So that's all for the today, and this whole project is published on electronicsforyou.com, and you can check that on electronicsforyou, uh, uh, and you will get the whole code and description how we have made it, and you will get every details of that. So if you want to ask any question, आप कोई और ask कोई कोई क्वेश्चन को ask करना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपको इस प्रोजेक्ट को बनाना है और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये पूरा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पर पे सबमिट है एंटी एडीएस दो वर्जन में, एडीएस सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम, एंड एडीएस लेन डिटेक्शन सिस्टम, and this is the second session. This session didn't end here. We will going to take this to the next step. Here we will detect the person. We will add the person detection system, pedestrian detection system, the car detection system, the traffic light, the signboard detection system for the ADS system, and we will combine that to the same ADS system to what we have built today. And we will then next we will take on another session. We will use all the system and try to deploy it on the actual vehicle, and then we will try to do, then we will try to deploy it with 1 minute. I'm showing you. Wait a minute.